हाय हाय हाय। हम मिट गए हैं जिनके लिए बिन कुछ कहे चुप चुप रहे। हम मिट गए हैं जिनके लिए बिन कुछ कहे चुप चुप रहे। ना 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 ना। हाय मम्मी। ऐसे ना हाय चलो अब पढ़ने चलते हैं। 50 पेज पढ़ना है, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। सो एंटीनेटल केयर पढ़ते हैं। सो एंटीनेटल केयर क्या होता है? जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है तब उसका जो केयर होता है उसको एंटीनेटल कहते हैं। सो एंटीनेटल केयर कैन बी डिफाइंड एज द केयर प्रोवाइडेड बाय स्किल्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। ठीक है, स्किल्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो केयर प्रोवाइड करता है टू अ प्रेग्नेंट वुमेन एंड प्रेग्नेंट एडोलेसेंट गर्ल्स इन ऑर्डर to ensure the best health condition for both mother and baby during pregnancy। ठीक है, देन हमारे पास क्या है? द कंपोनेंट ऑफ एएनसी इंक्लूड्स एंटीनेटल केयर का कंपोनेंट क्या होता है? रिस्क आइडेंटिफिकेशन, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रेगनेंसी रिलेटेड और concurrent concurrent disease, health education, health promotion। ANC reduces maternal and perinatal mortality and morbidity both directly through decisions and indirectly through the identification of woman and girl at increased। कैसे करते हैं? डिटेक्शन से एंड identification से by increased risk of developing complication during the labor and delivery, thus ensuring referral to the appropriate level of care। So रेफर करेगा। Ideally, this care should begin as soon as conception and continue till pregnancy. In some countries, notification of pregnancy is required to bring the mother in prevention care cycle as soon as possible। राइट? तो एएनसी का ऑब्जेक्टिव क्या है मम्मी? तुम बताओ प्रेग्नेंट वुमेन लोग का केयर करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? 8 ऑब्जेक्टिव है। 8 बताओ मम्मी। प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड मेंटेन द हेल्थ ऑफ मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्या क्या प्रमोट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और मेंटेन करते हैं वुमेन का हेल्थ। डिटेक्ट करते हैं हाई रिस्क केसेस को और गिव देम स्पेशल अटेंशन। फोरसी कॉम्प्लिकेशन एंड प्रिवेंट देम। कॉम्प्लिकेशन पहले से ही देख के उसको प्रिवेंट करेंगे। टू रिमूव एनजाइटी एंड dreaded associated with delivery, to reduce maternal and infant mortality and morbidity, to teach the mother elements of child care, nutrition, personal hygiene, and environment sanitation. So, to sanitize the mother to the need for family planning, family planning, including advice to cases seeking medical termination of pregnancy, attention to the under 5 accompanying the mother। तो हम लोगों ने क्या मम्मी ऑब्जेक्टिव 8 ऑब्जेक्टिव क्या देखा? पहला तो प्रमोट, प्रोटेक्ट और मेंटेन करना है हेल्थ को प्रेगनेंसी के टाइम में। दूसरा क्या है? हाई रिस्क को आइडेंटिफाई करके अटेंशन देना है, कॉम्प्लिकेशन से और बचाना है, एनजाइटी को रिमूव करना है, मैटरनल और इन्फेंट मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी को कम करना है, चाइल्ड केयर, न्यूट्रिशन ये सब के बारे में एजुकेट करना है, पर्सनल हाइजीन, एनवायरमेंट सैनिटेशन। देन मदर को बताना है फैमिली प्लानिंग के बारे में और एमटीपी के बारे में। देन उसके बाद अंडर 5 जो कंपनी कर रहा है उनको भी अटेंड करना है। The above objective are achieved by the following program of the healthcare services। तो ये क्या क्या प्रोग्राम हैं जिससे ये सारे ऑब्जेक्टिव अचीव होते हैं? तो वो हम लोग प्रोग्राम पढ़ते हैं। क्या यहाँ पे सारे प्रोग्राम दिए हैं? बिन कुछ कहे चुप चुप रहे। ना 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 ना। चलो एंटीनेटल विजिट देखते हैं। So ideally the mother should attend the antenatal clinic once a month during the first 7 month। फर्स्ट 7th मंथ में once a month मतलब एक बार 7 महीने तक उसको करना है। देन ट्वाइस अ मंथ ड्यूरिंग द नेक्स्ट मंथ, 8वें महीने में 2 बार उसको
एक महीने में दिखाना है, मतलब 8वें महीने में 2 बार दिखाना है, एंड देयर आफ्टर वंस अ वीक, और 9वें महीने में हर वीक में एक बार दिखाना है। इफ़ एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, ये कब का है? जब सब कुछ नॉर्मल है। ठीक है। A high proportion of mothers in India are from low socio-economic group, and many of them are working women. Attendance at the antenatal clinic may means loss of daily wages. Consequently, it is difficult for them to attend the antenatal clinic so often. In these cases, a minimum of 4 visits covering the entire period of pregnancy should be the target, as shown below. The suggested schedule is as follows. First visit within 12 weeks, preferably as soon as the pregnancy is suspected, for registration of pregnancy and first antenatal checkup. तो फर्स्ट विज़िट है वो विदिन 12 वीक्स, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कम से कम आ करके दिखा देना है फर्स्ट विज़िट। जो सेकेंड विज़िट है वो 14 से लेके 26 वीक तक है। ठीक है। देन जो थर्ड विज़िट होना चाहिए वो 28 से 34 वीक में होना चाहिए, और फोर्थ विज़िट जो है बिटवीन 36 वीक एंड टर्म के बीच में होना चाहिए। इट इज़ एडवाइजेबल फॉर वुमेन टू विजिट मेडिकल ऑफिसर at the PHC for an antenatal checkup during the period of 28 से लेके 34 वीक्स। थर्ड विजिट में कम से कम एक मेडिकल ऑफिसर को विजिट करना चाहिए। Beside this, she may be advised to avail investigation facilities at the nearest PHC, CHC, FRU. So, registration of pregnancy within 12 week is the primary responsibility of ANM. ANM का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वुमेन जो है वो रजिस्टर करवाए कि वो प्रेग्नेंट हो गई है विद इन 12 वीक्स। अपॉर्चुनिटीज सच एज विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे। कौन सा प्रोग्राम आ गया? विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे शुड बी अवेल्ड टू एंश्योर अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड एंटीनेटल चेकअप। बिन कुछ कहे वो चुप चुप रहे, ना 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 ना, ऐसे ना हो जाओ आहा, खोया खोया चाल खुला आसमां। So, early pregnancy detection is important for the following reasons. इन reasons की वजह से हमें early pregnancy detection करना है। क्या reasons है? It facilitates proper planning and allows for adequate care to be provided during pregnancy for both the mother and the fetus. Record the data of last menstrual period and calculate the expected date of delivery. The health status of the mother can be assessed, and any medical illness that she might be suffering from can be detected. Also, to obtain and record the baseline information on blood pressure, weight, hemoglobin, etc. It helps in timely detection of complication at an early stage, ठीक है, and helps to manage them appropriately by referral as and where required. It also helps to confirm if the pregnancy is wanted, and if not, then refer the woman at the earliest to 24-hour PHC and FRU that provides safe abortion services. The health personnel should be alert to the possibility of sex selection abortion, as such abortion are illegal. Then early detection of pregnancy and provision of care for such initial stage facilities, a good interpersonal relationship between the caregiver and the pregnant woman. Now, estimation of number of pregnancies
इट इज स्पेसिफाइड एरिया एट प्रेगनेंसी ट्रैकिंग, मतलब हम लोग एक एरिया ले लिए, अब हम लोग उसमें कैलकुलेट करेंगे कि इस एरिया में नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज कितना होगा और हम लोगों ने कितना ट्रैक किया है, तो इतना प्रेगनेंसी छूट गया, ट्रैक नहीं किया हम लोगों ने, तो ये इसका फ़ायदा होता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। ऐसे ना हो जाओ हा हा हा, खोया खोया चांद, खुला आसमां। So to ensure complete registration, it is essential that ANM should know the estimate number of pregnancies to be registered annually in her area. Calculate the expected number of annual pregnancies in the area will help her judge how good her pregnancy registration is. In case the number of pregnancy registered is less than that of the expected pregnancies, she need to track down the pregnancies she has missed. With the help of ASHA, AWW and AWW. So basic काम ANM का होता है सब. Estimating the number of pregnancies will also help her judge whether uh, she has an adequate stock of the supplies required to provide ANC, such as TT है इसके पास, आयरन फोलिक एसिड टैबलेट है कि नहीं, ANC रिकॉर्ड फॉर्म्स है कि नहीं, and track any complication that arises during this period. The number of expected pregnancies per year क्या होता है? The ANM must know the population size and birth rate of the area under a jurisdiction. The expected number of live birth may be calculated as shown. Expected number of live birth जो होता है in 1 year, बर्थ रेट पर 1000 पॉपुलेशन, जो बर्थ रेट होगा पॉपुलेशन ऑफ द एरिया से इंटू कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 1000 से. एज सम प्रेगनेंसीज मे नॉट रिजल्ट इन लाइव बर्थ, दैट इज अबॉर्शन हो जाता है and still birth can occur, then expected number of live birth would be an underestimation of the total number of pregnancies. Hence, a correction factor of 10% is required. That is, add 10% to the figure obtained. So this is the total number of expected pregnancy. ये जो expected number of live birth आया है, लाइव बर्थ में क्या ऐड कर लेंगे? 10% ऑफ लाइव बर्थ को और ऐड कर देंगे. क्यों? क्योंकि कुछ प्रेगनेंसीज जो होगा वो अबॉर्शन और स्टिल बर्थ में रिजल्ट करेगा, इसलिए. तो हम लोग ऐड क्यों करें? सब्ट्रैक्ट में करना चाहिए. So, as a thumb rule, in any given month, approximately half the number of pregnancies estimated above should be in record. Example of estimation of number of pregnancies annual. Birth rate कितना है? 25 per 1000 population में. So population under the sub center कितना है? 5000. Therefore expected number of live birth to 25 into 5000 by 1000 कर देंगे, और करेक्शन फैक्टर कितना आ जाएगा? 10% ऑफ 125, 13 आ जाएगा. सो 125 बर्थ प्लस 13 कर देंगे, 138 आ जाएगा. So in any month, ANM should have about 69 pregnancies registered with her. ये कहाँ से आया? 69 pregnancies किधर से आया भाई? बड़ा दिक्कत है. The number
If the number of women registered is less than expected, the ANM should approach community leader and key people to ensure that pregnant women are registered and come for ANC. तो एएनएम किसके पास जाएगा? कम्युनिटी लीडर के पास जा कर के बोलेंगी कि प्रेग्नेंट वुमेन को रजिस्टर करवाओ एएनसी से. आशा एंड लिंक वर्कर शुड विजिट एवरी हाउस इन द एरिया एंड एंश्योर दैट ऑल प्रेग्नेंट वुमेन आर रजिस्टर्ड. Some women may receive ANC from the private sector. Ensure that their names together with the name of the facility where they are registered are mentioned in the antenatal register. The ANM must keep track of all pregnant women in her area. In case of a registered woman does not turn up for her ANC visit, ANM must follow her and counsel her for the regular ANC checkup. An antenatal checkup after a missed appointment should include all the component of the missed visit as well as those that corresponds to the present visit. For example, the woman should be given her TT injection and supply of IFA tablet. Her weight and blood pressure should be checked beside the screening for complication. ठीक है. A policy decision has been taken for name-based tracking system whereby pregnant women and children can be tracked for the ANCs and immunization along with a feedback system for the ANM ASHA. So this has been done to ensure that all pregnant women receive their ANCs and PNCs and children receive full immunization. This will also help in tracking and ensuring ANM PNC for missed or left out cases. Now preventive services for mother, antenatal checkups. The first visit, irrespective of when it comes, should include the following component. History taking लेना है. During the first visit, detailed history of the woman needs to be taken. Confirm the pregnancy, first visit only. Identify whether there were complications during any previous pregnancy confinement that may have a bearing on the present one. Identify any current medical, surgical or obstetric condition that may complicate the present pregnancy. Record the date of first day of LMP and calculate EDD. ठीक है, by adding 9 months 7 days to the first day of menstrual period. अब रिकॉर्ड सिम्टम्स इंडिकेटिंग कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि फीवर, परसिस्टिंग वॉमिटिंग, abnormal vaginal discharge, bleeding, palpitation, easy fatigability, breathlessness at rest or on mild exertion, generalized swelling of the body, headache, blurring of the vision, burning in passing urine, decreased or absent fetal movement, etc. History of any current systemic illness, example hypertension, diabetes, heart disease, tuberculosis, renal disease, epilepsy, asthma, jaundice, malaria, reproductive tract infection, STD, HIV, etc. Record family history of hypertension, diabetes, tuberculosis, thalassemia, family history of twins or congenital malformation, history of drug allergy and habit forming drugs. Hi mummy, hi, I can see you very well. You are listening the chapter. सो फिज़िकल एग्जामिनेशन में हमको क्या देखना है पेशेंट का? तो पैलर देखना है. प्रेजेंस ऑफ पैलर indicates anemia. The woman should be examined for pallor at each visit. Examine woman's conjunctiva, nail, tongue, oral mucosa, palms. Pallor should be correlated with hemoglobin estimation. Pulse. The normal pulse rate is 60 to 90 beats per minute. The pulse rate is persistently low or high with or without other symptoms. The woman need medical attention. Then respiratory rate देखना है पेशेंट का.
It is important to check the respiratory rate, especially if the woman complains of breathlessness. Normal respiratory rate is 18 to 20 breaths per अरे 18 to 20 breaths per minute होता है क्या क्या लोग बोलते हैं so 18 to 20 breaths per minute एक प्रेग्नेंट वुमेन का नॉर्मल ब्रेथ होता है नाउ एडिमा जो होता है स्वेलिंग उसको कहते हैं विच अपीयर्स इन द इवनिंग में अपीयर होगा एंड डिसअपीयर इन द मॉर्निंग आफ्टर अ फुल नाइट्स स्लीप कुड बी अ नॉर्मल मैनिफेस्टेशन ऑफ प्रेगनेंसी एनी एडिमा ऑफ द फेस हैंड एब्डोमिनल वॉल एंड vulva is abnormal. Edema can be suspected if a woman complains of abnormal tightening of any ring of her finger. She must be referred immediately for further investigation if there is edema in association with high blood pressure, heart disease, anemia, proteinuria. The woman should be referred to the medical officer. उसके बाद हमें ब्लड प्रेशर देखना है. So, measure the woman's blood pressure at every visit. It is important to rule out hypertensive disorders of pregnancy. Hypertension is diagnosed when two consecutive reading taken 4 hours or more apart shows systolic BP to be 140 mmHg or more and diastolic to be 90 mmHg or more. High BP during pregnancy may signify pregnancy induced hypertension PIH and or chronic hypertension. If the woman has high blood pressure, check her urine for the presence of albumin. The presence of albumin plus 2 together with high blood pressure is significant to categorize her as having preeclampsia. Refer her to the MO immediately. If the diastolic blood pressure of the woman is above 110 mmHg, it is a danger sign that points towards imminent eclampsia. The urine albumin should be estimated at the earliest. If it is strongly positive, the woman should be referred to the FRU immediately. If the woman has high blood pressure but no urine albumin, she should be referred to the MO at 24 into 7 PHC. A woman with PIH, preeclampsia, or imminent eclampsia requires hospitalization and supervised treatment at 24-hour PHC FRU. हाय मम्मी. देन वेट हमें देखना है. ठीक है, वेट में क्या देखना है? अ प्रेग्नेंट वुमेन वेट शुड बी टेकन एट ईच विजिट. द वेट टेकन ड्यूरिंग द first visit register should be treated as the baseline weight. Normally, a woman should gain 10 to 12 kg during her pregnancy. Ideally, after the first trimester, the pregnant woman gains around 2 kg every month. If the diet is not adequate, if the woman is taking less than the required amount of calories, she might gain only 5 to 6 kgs during her pregnancy. An adequate dietary intake should be suspected if the woman gains less than inadequate dietary less than 2 kg per month. She needs to be put on food supplementation. The help of AW auxiliary workers जो होते हैं should be taken in this matter, especially for these categories of women who need it the most. Low weight gain usually leads to intrauterine growth retardation resulting in birth of the baby with a low birth weight. Excessive weight gain more than 3 kg in month should raise suspicion of preeclampsia, twins, multiple pregnancy or diabetes. Take the woman's BP and test her urine for proteinuria and sugar. If the blood pressure is high and the urine is positive for
protein and sugar, refer her to medical officer. Breast examination, observe the size and shape of the nipple and for the presence of inverted or flat nipple. देन हम लोग एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे. उसमें क्या करेंगे? ओह हाय शशांक. ओ माय गॉड शशांक, व्हेन डिड यू कम? इट्स गोइंग गुड, इट्स गोइंग गुड. ओह आई मिस यू. तुम तो नहीं हो, तुम तो मेरे पढ़ाई में नहीं हो. मैं तो अकेले पढ़ रही हूँ. यू आर एंजॉइंग योर पार्टी. एंजॉय इट. आई एम रीडिंग. और फिर एग्ज़ाम में यू व्हाट विल यू डू? आके पढ़ लेना, ठीक है. आई टेल यू कि मैंने क्या पढ़ा है. मैं समराइज़ कर दूँगी. ये पार्क तो वैसे भी बहुत बड़ा है ना. हाय मम्मी. हाय शशांक. सो फिर आगे पढ़ते हैं. एब्डोमिनल एग्जामिनेशन. सो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में क्या है? एग्जामिन द एब्डोमेन ऑफ टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द प्रेगनेंसी एंड फीटल ग्रोथ. The abdominal examination includes the following: measurement of fundal height. ठीक है, fundal height को देखेंगे. Enlargement of the uterus and the height of the uterine fundus is as shown in figure 1. So 12 वीक जो होता है यूट्राइन फंडस जस्ट पैल्पेबल पर एब्डोमेन. पर एब्डोमेन देख सकते हैं हम लोग. 12 मतलब इट्स नॉट इवन सिग्निफिकेंट. 20 वीक जो होता है फंडस फ्लैट एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द अम्बिलिकस. ये रहा 20 वीक. ये अम्बिलिकस है 20 वीक. सो 20 वीक जो होता है ना वो अम्बिलिकस तक आ जाता है, यहाँ तक आ जाता है 20 वीक में. 36 वीक 36 वीक में क्या होता है? फंडस फेल्ट एट द लेवल ऑफ जीफी स्टर्नम. The duration of pregnancy should always be expressed in the terms of completed week. In the first half of the pregnancy, the size of the uterus is of greatest value in confirming the calculated duration of pregnancy. अब fetal heart sound सुनेंगे. So fetal heart sound can be heard after 6 month. 6 month के बाद सुन सकते हैं fetal heart sound. The rate varies between 120 to 140 per minute. They are usually best heard in the midline. Midline में best heard होता है after 28th week. Their location may change because of the position and lie of the fetus. Hi Shanky. Ha ha ha. Hoo hoo hoo. Hee. Ah. चलो. तो मिडलाइन में सुनते हैं. 6 मंथ के बाद फीटल हार्ट साउंड सुनेंगे. यूजुअली आफ्टर 28 वीक लोकेशन चेंज करेगा. क्यों? क्योंकि पोजीशन और लाई ऑफ फीटस वो चेंज कर जाता है. ठीक है. देन हाँ दिव्या. मेरे पास ना एक सिल्वर वाला भी है. ये भी ले लो. ये सिल्वर में है और ये वाइट में. देन उसके बाद क्या था हमारा? फिर फीटल मूवमेंट देखेंगे. ठीक है. फीटल मूवमेंट कैन बी फेल्ट बाय द एग्जामिनर आफ्टर 18th से 22nd वीक बाय जेंटल पैल्पेटिंग द एब्डोमेन. मतलब 18 से 22 वीक में मूवमेंट फील होगा फीटस का. देन फीटल पार्ट्स. So these can be felt about the 22nd week. Fetal parts. After the 28th week, it is possible to distinguish the head, back and limb. 28th week के बाद head, back और limb भी distinguish कर सकते हैं. Multiple pregnancies. This must be suspected if the uterus is larger than the estimated gestational age or palpation of multiple fetal parts.
सो मल्टीपल प्रेगनेंसी कब एक्सपेक्ट करेंगे? जब यूट्रस बहुत बड़ा है, या फिर पैल्पेशन ऑफ मल्टीपल फीटल पार्ट्स मिल रहा है, ठीक है। फीटल लाई एंड प्रेजेंटेशन कब देखेंगे? 32 वीक्स के बाद देखेंगे। इंस्पेक्शन ऑफ द एब्डोमिनल स्कार देख लेंगे, रेलिवेंट एब्डोमिनल फाइंडिंग है कि कुछ नहीं है। देन असेसमेंट ऑफ जेस्टेशनल एज, ठीक है। तो जेस्टेशनल एज का एस्टिमेशन हम लोग कैसे करेंगे? सो मेजरमेंट ऑफ जेस्टेशनल एज हैज़ चेंज्ड ओवर द टाइम as the dominant effect of the gestational age on survival and long-term impairment has become apparent over the last 30 years. Perinatal epidemiology has shifted from measuring birth weight along the alone to focusing on gestational age. The most accurate gold standard for assessment in is routine early ultrasound assessment together with fetal measurements, ideally in the first trimester. Gestational age assessment based on the date of LMP was previously the most widespread method used and remains the only available method in many settings. Many countries now use best obstetric estimate, combining ultrasound and LMP as an approach to estimate gestational age. It can have a large impact on the number of preterm birth reports. Reported, ठीक है। Any method using ultrasound requires skilled technicians. हाय मम्मी। कोई भी मेथड यूएसजी अगर इन्वॉल्व करेंगे, स्किल टेक्नीशियन होना चाहिए, इक्विपमेंट एंड फॉर मैक्सिमम एक्यूरेसी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंटीनेटल क्लिनिक अटेंडेंस. These are not common in low income setting where majority of preterm birth occur. Alternative approach to LMP in these settings include fundal height, clinical assessment of the newborn after birth, and birth weight as a surrogate. नाउ लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन देख लेते क्या क्या हम लोग करेंगे। लैब टेस्ट प्रेग्नेंट वुमेन का। सो लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन क्या है? ओह थैंक यू मम्मी। सो द फॉलोइंग लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन आर कैरिड आउट एट द फैसिलिटीज़ इंडिकेटेड बिलो। सब सेंटर में हम लोग क्या करेंगे? PHC, CHC, FRU में क्या करेंगे? सो सब सेंटर में हम लोग क्या करेंगे? कौन कौन सा लैब इन्वेस्टिगेशन करेंगे? सो प्रेगनेंसी डिटेक्शन टेस्ट, हेमोग्लोबिन एग्जामिनेशन, यूरिन टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ एल्ब्यूमिन एंड शुगर, ठीक है। यूरिन टेस्ट करेंगे, उसमें एल्ब्यूमिन और शुगर देख लेंगे। रैपिड मलेरिया टेस्ट करेंगे। देन एट द PHC, CHC एंड FRU इसमें क्या करेंगे? ब्लड ग्रुप इंक्लूडिंग RH फैक्टर, VDRL, RPR का चेकिंग करेंगे। देन HIV टेस्टिंग करेंगे। रैपिड मलेरिया टेस्ट करेंगे इफ़ अनअवेलेबल एट SC। ब्लड शुगर टेस्टिंग करेंगे। HbS-Ag फॉर हेपेटाइटिस B इन्फेक्शन करेंगे। देन एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ एवरी एंटीनेटल चेकअप, सो टेक द पेशेंट्स हिस्ट्री, पेशेंट का हिस्ट्री लो। Then conduct a physical examination, measure the weight, BP, RR, pallor, edema, ये सब check करो. Then conduct abdominal palpation for fetal growth, fetal lie, auscultation of fetal heart sound according to the stage of the pregnancy. Then carry out laboratory investigations such as hemoglobin estimation and urine test for sugar and protein. ओह थैंक यू मम्मी, थैंक यू मम्मी। तो हम लोग क्या करेंगे? एसेंशियल कंपोनेंट क्या बताओ एंटीनेटल चेकअप का? पहले हिस्ट्री लो, फिजिकल एग्जामिनेशन करो, उसमें BP, RR, पैलर, एडिमा ये सब तो देख ही लेंगे। हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन कर लिया, फिर एब्डोमिनल पैल्पेशन करो, उससे हम लोग को फीटल का ग्रोथ, फीटल लाई, ऑस्कल्टेशन, फीटल हार्ट साउंड ये सब पता चल जाएगा स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। ये तीनों कर लिया।
देन क्या करेंगे, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, हेमोग्लोबिन जैसे यूरिन टेस्ट करवाओ, शुगर और प्रोटीन ये सब देखने के लिए। अब इंटरवेंशन और काउंसलिंग करने का पार्ट आ गया। तो आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन दे दो औरत को, ठीक है। इम्यूनाइजेशन करवाओ टेटनस के अगेंस्ट। देन ग्रुप और इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन ऑन न्यूट्रिशन, फैमिली प्लानिंग, सेल्फ केयर, डिलीवरी एंड पेरेंटहुड पे काउंसलिंग करना है। होम विजिट बाय अ फीमेल हेल्थ वर्कर ट्रेंड दाई, रेफरल सर्विस where necessary, inform the woman about जननी सुरक्षा योजना एंड अदर इंसेंटिव ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट। तो हमें उधर बताना है औरत को जननी सुरक्षा योजना के बारे में। हमें खुद ही पता होगा तभी ना बताएंगे, मुझे खुद ही नहीं पता है जननी सुरक्षा योजना के बारे में। है क्या बताएंगे, लोल। छी। चलो अब रिस्क अप्रोच पढ़ते क्या होता है। सो रिस्क अप्रोच क्या होता है? द सेंट्रल पर्पस ऑफ एंटीनेटल केयर इज़ टू आइडेंटिफाई हाई रिस्क केसेस। हमें हाई रिस्क केसेस को आइडेंटिफाई करना एज अर्ली एज पॉसिबल फ्रॉम अ लार्ज ग्रुप ऑफ एंटीनेटल मदर एंड अरेंज फॉर देम skilled care where continuing to provide appropriate care for all the mothers. These cases comprises of the following: early primary, 30 या 30 से अबव हो गई है तो वो और पहली बार तब बच्चा पैदा कर रही है तो वो हाई रिस्क केस में आ जाती है। कितना अजीब बात है ना, 30 के बाद हाई रिस्क में आ जाती है औरत लोग। नाउ शॉर्ट स्टेचर्ड प्राइमी, 140 सेंटीमीटर एंड बिलो, जो छोटी है वो भी हाई रिस्क में आ जाती। मैल प्रेजेंटेशन, अगर ब्रीच है, ट्रांसवर्स लाई है तो वो भी हाई रिस्क में आ जाते हैं। एंटी पार्टम हेमरेज हुआ है, एंटी पार्टम मतलब कि बच्चा पेट में और हेमरेज हुआ है या थ्रेटेंड अबॉर्शन है, हाई रिस्क में आ गए। एक्लेम्पशिया या प्री एक्लेम्पशिया, एनीमिया वाले, ट्विंस, हाइड्रोएमनियोज वाले, प्रीवियस स्टिल बर्थ हो रखा है या इंट्रा यूट्राइन डेथ हो रखा है या मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा हो रखा है तो वो सब हाई रिस्क में आ जाते हैं। अर्ली ग्रैंड मल्टीपेरस है, एल्डरली। ना प्रोलॉन्ग्ड प्रेगनेंसी है, अगर 14 दिन आफ्टर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है तो वो हाई रिस्क ग्रुप में आ जाएगा। हाई हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस सिजेरियन और इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी तो हाई रिस्क में आ जाएगा। प्रेगनेंसी एसोसिएटेड विद जनरल डिजीज़ जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, किडनी डिजीज़, डायबिटीज़, ट्यूबरकुलोसिस, लिवर डिजीज़, मलेरिया, कन्वर्शन, एज़मा, HIV, RTI, STI, तो ये सब केसेस में हाई रिस्क ग्रुप आ जाता है। ट्रीटमेंट फॉर इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी के लिए ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो वो भी हाई रिस्क में आ जाते हैं। 3 और more स्पॉन्टेनियस कंजिक्यूटिव अबॉर्शन, 3 या 3 से ज़्यादा स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो रखे हैं वो लोग हाई रिस्क में आ जाते हैं। द रिस्क अप्रोच इज़ अ रिस्क अप्रोच बेसिकली है कि बाकी सारे मदर्स से जो हाई रिस्क में आते हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको ज़्यादा केयर करना है। द रिस्क अप्रोच इज़ अ मैनेजेरियल टूल फॉर इम्प्रूव्ड MCH केयर। Its purpose is to provide better services for all, but with special attention to those who need them most. Inherent in this approach is maximum utilization of all the resources, including some human resources that are not conventionally involved in such care. Traditional birth attendants, community health worker, women's group, for example. The risk strategy is the risk strategy is expected to have far reached effect on the whole organization of MCHFP services and leads to improvement in both the coverage and quality of health care at all level, particularly at primary health care level. So मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड क्या है? मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड शुड बी ड्यूली completed for every woman registered. It contains a registration number
identifying data, previous health history, main health events, etc. The case record should be handed over to the woman. She should be instructed to bring the record with her during all subsequent checkup visits, and also to carry it along with her at all time of delivery. This card has been developed jointly by Ministry of Health and Family Welfare, MOHFW, Ministry of Health and Family Welfare, and Ministry of Women and Child Development. ये दोनों मिल के मिनिस्ट्री बनाए हैं ये कार्ड को, इन टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन रिकॉर्ड कीपिंग. दिस विल ऑल्सो हेल्प इन सर्विस प्रोवाइडर टू नो द डिटेल्स ऑफ प्रीवियस ANC PNC. ए शशांक, मैंने सोचा है ना कि हम अपने बाल को कलर करवाएंगे, वो भी रेड कलर का. कितना सुंदर लगेगा. ओह माय गॉड्स. रेड कलर का बाल को कलर करवा लेंगे, मॉसेस लगा लेंगे, और फिर बाल पूरा कर्ली कर्ली हो जाएगा और पूरा रेड रेड दिखेगा. आई लुक लाइक वैम्प. कोमलिका निका. ये मैंने मम्मी को ही बोला. मम्मी पूछ लेना अगर मम्मी होगी, मम्मी सुन रही होगी तो. मैंने मम्मी को घर में बोला कि हम अपना लाल कलर करवा लेंगे, अब नहीं तो कब करवाएंगे. तो मम्मी ने बोला ठीक है. कमलिका. हम पूरा ये वैम्प बन के घूमेंगे, कोमोलिका बन के घूमेंगे. अगर देख के सब गिर जाएंगे और डर जाएंगे. घायल हो जाएंगे लोग, गिर पड़ रहेंगे, खून उनके आंखों से आने लगेगा, लोग बेहोश होंगे. मैं लोगों की को IV फ्लूइड चढ़ाऊंगी और कमनिका ऐसे करेंगे. चलो ठीक है, आगे पढ़ो. पूरा रेड नहीं करवाएंगे, ब्लैक और रेड का मिक्सचर रखेंगे. नहीं नहीं, श्रुति मैम की तरह नहीं, रेड एंड ब्लैक का मिक्सचर रखेंगे. आधा रेड आधा. देखो मम्मी ने भी हाय बोला. मम्मी बोल रही है, मम्मी इज़ अप्रूविंग. मम्मी आशीर्वाद दे रही है अपने हाथों से, और लाल हाथ दे रही है क्योंकि लाल बाल करवाने को बोल रही है. देखे, मेरी मम्मी एक शब्द में सब कुछ कह जाती है. चलो आगे बढ़ते हैं. So, for routine and emergency care, the information contained in the card should also be recorded in antenatal register as per the health management information system format. ठीक है. Home visit. तो home visit is the backbone of all MCH service. Even if the expectant mother is attending the antenatal clinic regularly, it is suggested that she must be paid at least one home visit by health worker, female or public health nurse. More visits are required if delivery is planned at home. The mother is generally relaxed at home. The home visit will win her confidence. The home visit will provide an opportunity to observe the environment and social condition at home, and also the opportunity to give prenatal advices. दूसरा, अब हम लोग प्री नेटल एडवाइसेस के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है. तो मेजर कंपोनेंट ऑफ एंटीनेटल केयर इज एंटीनेटल और प्रीनेटल. प्रीनेटल क्या होता है? बच्चा पैदा होने से पहले का ना, प्रीनेटल advice. The mother is more receptive to advice concerning her and her baby at the time than at other times. The talking points should be covered not only the specific problems of pregnancy and childbirth but overflow into family and child health care. तो डाइट, हमें क्या क्या पॉइंट्स पहले देख लो कि क्या क्या पॉइंट्स हमें मदर को बताना है. ठीक है. पहले उसके डाइट को ठीक करना है, पर्सनल हाइजीन को ठीक करना है ताकि इन्फेक्शन ना हो. फिर ड्रग्स जो ले रहे हैं उसके बारे में बताना ही बताना है मदर को, क्योंकि बहुत सारा टेराटोजेनिक हो जाता है. देन रेडिएशंस के बारे में बताना है, वार्निंग साइंस के बारे में बताना है, चाइल्ड केयर के बारे में बताना है. ये 6 चीज़ बताना है. क्या? पहले हम लोग डाइट बताएंगे, राइट. देन हम लोग पर्सनल हाइजीन, उसके बाद ड्रग्स, उसके बाद रेडिएशन, वार्निंग साइंस, चाइल्ड केयर. देन डाइट के बारे में क्या बताएंगे? रिप्रोडक्शन कॉस्ट एनर्जी.
Okay, reproduction cost energy. A pregnancy in total duration consumes about 60,000 kilocalories over and above normal metabolic requirement. 60,000 kilocalories. So, lactation demands about 550 kilocalorie per day. Further, child survival is correlated with birth weight, and birth weight is correlated with the weight gain of the mother during pregnancy. On an average, a normal healthy woman gains about 9 to 11 kg of the weight during pregnancy. Several studies have indicated that weight gain of poor Indian women average 6.5 kg ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. पुअर मतलब गरीब औरत जो होती है ना, उसका 6.5 kg ही वेट गेन होता है. ठीक है. Thus, pregnancy imposes the need for considerable extra calorie and nutrients required. If maternal stores of iron are poor, as may happen. हाँ रिवर हो गया. ये हम आएंगे थोड़ी देर बाद देखने, ठीक है. गाइस हम 5 मिनट का वीडियो ब्रेक ले रहे हैं. थैंक यू गाइस. ठीक है गाइस, तो हम लोग कहाँ पे थे? तो मैटरनल स्टोर ऑफ आयरन आर पुअर. ठीक है. So maternal store of iron are poor, as may happen after repeated pregnancy, and if enough iron is not available to the mother during pregnancy, it is possible that fetus may lay down insufficient iron store. Such a baby may show a normal hemoglobin at birth but will lack the store of iron necessary for rapid growth. ठीक है. ग्रोथ के समय मतलब जब पैदा होगा तब तो दिखेगा उसको कि नॉर्मल है, पर जब उसका ग्रोथ होगा तब आयरन का कमी हो जाएगा, समझे. इसलिए बहुत कॉमन होता है बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी. क्यों? क्योंकि मदर ने आयरन सप्लीमेंटेशन लिया नहीं होगा. बच्चे का बर्थ के समय तो वो नॉर्मल दिख रहा है, पर जैसे ही ग्रो किया उसके पास आयरन स्टोर्ड नहीं है. जब स्टोर्ड आयरन नहीं है तो उसका तुरंत डिप्लीट हो गया, ख़त्म, गॉन. ओ गोपाल सेन, हेलो गोपाल सेन, हाय गोपाल. आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था, मैंने आपको बोला था, एंड आई वाज होपिंग कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करोगे, बट आपने नहीं किया, एंड आई वाज सो हर्ट. हाँ. आज हम लोग गोपाल, हम लोग आज कम्युनिटी मेडिसिन पढ़ रहे हैं, पीएसएम. बेसिकली इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन जो है उनका किस तरीके से केयर किया जाता है. अभी हम लोग देख रहे थे कि प्री नेटल एडवाइसेस क्या दिया जाता है. पहले हम लोग देंगे कि डाइट कैसे इम्प्रूव करना है. तो हमें कैलोरी बढ़ाना है, टोटल
60,000 किलो कैलोरी ओवर प्रेगनेंसी बढ़ाना है, 550 कैलोरी पर डे हमें लैक्टेशन के समय बढ़ाना है। देन वेट गेन होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 9 से 11 kg वेट गेन होना चाहिए मदर का थ्रू आउट प्रेगनेंसी। देन आयरन रिजर्व, हमें आयरन की गोलियां देनी है जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उन्हें, ठीक है, ताकि उनको और उनके बच्चे को सफिशिएंट आयरन रहे, क्योंकि ग्रोथ भी करना है। एंड इंक्रीजेस इन ब्लड वॉल्यूम एंड मसल मास इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, ठीक है, बट विल लैक stores of iron necessary for rapid growth and increase in the blood volume and muscle mass in the first year of life, इसलिए पतले रह जाएंगे। स्ट्रेस इन द फॉर्म ऑफ मलेरिया मेरी मम्मी को हुआ था। Stresses in the form of malaria and other childhood infection will make the deficiency more acute and many infant become severely anemic, बहुत ज़्यादा एनेमिक हो जाते हैं, जैसे मलेरिया वलेरिया हो जाता है तो बहुत ज़्यादा। गोपाल जी आपने क्या लिख करके डिलीट कर दिया? अच्छा, बहुत अक्यूट हो जाता है, अक्यूटली एनेमिक हो जाता है जो बच्चे होते हैं वो लोग, ठीक है। Now, during the early months of life, a balanced and adequate diet is therefore utmost importance during pregnancy and lactation to meet the increased need of the mother and to prevent nutritional stress. सो पर्सनल हाइजीन, अब पर्सनल हाइजीन के बारे में मदर को क्या बताना है हमें? सो ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस इज एक्टिव रिगार्डिंग advice regarding personal hygiene, personal cleanliness. First one is personal cleanliness. This needs to The need to bathe every day and to wear clean clothes should be explained. The hair should also be kept clean and tidy. कुछ लोगों को मुझे बता बता के हम थक गए कि हर दिन नहाना पड़ता है, पर वो आज तक वो पता नहीं, धीरे धीरे करके शायद सुधर रहे होंगे। देन पेशेंट को क्या बताना है? रेस्ट एंड स्लीप के बारे में। नहीं, मैं थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ाती। तो रेस्ट एंड स्लीप के बारे में पेशेंट को क्या बताना है, मतलब मदर को क्या बताएंगे कि 8 घंटा का नींद लेना है एंड एटलीस्ट 2 आवर रेस्ट आफ्टर मिड डे मील, ठीक है। मिड डे मील यानी दोपहर का खाना खाने के बाद 2 घंटे का रेस्ट एटलीस्ट लेना है, शुड बी एडवाइज्ड। बॉवल के बारे में क्या बताना है मदर को कि लीफी वेजिटेबल, फ्रूट और एक्स्ट्रा फ्लूइड लेना है। परगेटिव्स लाइक कैस्टर ऑयल, ठीक है, कैस्टर ऑयल शुड बी अवॉइडेड, उसको कैस्टर ऑयल को नहीं लेना है टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन। लाइक कॉन्स्टिपेशन कम करता है कैस्टर ऑयल, बट हमें ये प्रेगनेंसी के समय अवॉइड करना है, शुड बी अवॉइडेड, ठीक है। मैं 3rd ईयर में हूँ। देन हमें एक्सरसाइज के लिए क्या एडवाइस करना है? लाइट हाउस होल्ड वर्क इज़ एडवाइज्ड। बहुत लोग प्रेग्नेंट होकर के कुछ काम ही नहीं करते। नो, यू हैव टू डू एक्सरसाइज, लाइक लाइट हाउस होल्ड एक्सरसाइज करने से डिलीवरी भी स्मूथ रहती है। बट मैनुअल फिजिकल लेबर ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी में एडवर्सली अफेक्ट द फीटस। बट बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है लेट प्रेगनेंसी में खास करके। देन स्मोकिंग के बारे में हमें क्या बताना है? स्मोकिंग शुड बी कट डाउन टू अ मिनिमम, ठीक है, स्मोकिंग नहीं करना है। एक्सपेक्टेंट मदर हु स्मोक हेविली प्रोड्यूसेस बेबीज मच स्मॉलर देन द एवरेज, ठीक है, छोटे बच्चे हो जाते हैं और छोटे बच्चे होंगे तो उनको इन्फेक्शन का भी खतरा हो जाता है। इट इज़ बिकॉज निकोटीन जो होता है ना हैज़ अ वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर इन्फ्लुएंस इन द यूट्रस में क्या करता है? वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा तो ब्लड नहीं जाएगा एंड इंड्यूसेस अ डिग्री ऑफ प्लासेंटल इनसफिशिएंसी, तो प्लासेंटल इनसफिशिएंसी कॉज कर देगा निकोटीन। द adverse effect of smoking ranges from low birth weight to an increased risk of perinatal death of the infant.
Women who smoke during pregnancy give birth to babies which on average weighs 170 gram less than the babies of non-smoker. The perinatal mortality among babies whose mother smoked during pregnancy is between 10 to 40% higher than in non-smokers. देन हमें बताना है कि आपको अल्कोहल भी नहीं पीना है. एविडेंस इज माउंटिंग दैट अल्कोहल कैन कॉज अ रेंज ऑफ फर्टिलिटी प्रॉब्लम इन वुमेन. मॉडरेट टू हैवी ड्रिंकर्स who become pregnant have greater risk of pregnancy loss, and if they do not abort, their children may have various physical and mental problems. Heavy drinking has been associated with fetal syndrome, which includes intrauterine growth retardation and developmental delay. More recently, it has been shown that the consumption of even moderate amount of alcohol during pregnancy is associated with an increased risk of spontaneous abortion. Then dental care के बारे में क्या बोलना है? Advice should also be given about oral hygiene. Then sexual intercourse के बारे में this should be restricted, especially during late trimester. ठीक है. हमें 2200 कैलोरी कंज्यूम करनी चाहिए. यस, करनी चाहिए. डिपेंड्स अपॉन कि आप का वर्क क्या है. लाइक जो सेडेंटरी है उन्हें रिलेटिवली कम कंज्यूम करना पड़ता है कैलोरी, और जो माइल्ड वर्क करते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा, जो उससे ज़्यादा हैवी वर्क करते हैं उनको और ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम करनी पड़ती है. एंड कैलोरी शुड नॉट ऑलवेज बी लाइक कार्बोहाइड्रेट. इट शुड ऑल्सो इंक्लूड प्रोटीन. कम नहीं खाना पड़ता मतलब, इसका क्या मतलब होता है कम नहीं खाना पड़ता? प्रोटीन वाला डाइट इज़ द बेस्ट डाइट. उससे यूजुअली डिज़ीज़ जो रहते हैं ना वो अबे रहते हैं, दूर रहते हैं. डिज़ीज़ बहुत कम होती है. हाय मम्मी. अच्छा मम्मी तुम ये सुन लो. हम लोग जो प्रोटीन का खाना खाते हैं ना, खाने में हमारा कैलोरी होता है, प्रोटीन होता है. अब प्रोटीन जो होता है ना वो बेस्ट खाना होता है. वो बीमारी सबको बहुत कम रखेगा. उससे शुगर नहीं होगा, उससे तुम वेट नहीं ज़्यादा बढ़ेगा, इंसान फीलिंग महसूस करेगा, नींद नहीं आएगा, ताकत बना रहेगा. सो प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन खाना. कैलोरी भी इम्पॉर्टेंट है, ताकि अभी जो एनर्जी आया हुआ है वो कैलोरी से आता है. पर कैलोरी हाँ इंडियन डाइट में बहुत ज़्यादा होता है. लाइक मोस्टली कैलोरी होता है, प्रोटीन बहुत कम होता है. इस वजह से हम लोग सब मोटे और भैंस की तरह होते जा रहे हैं. सो हमारा बैलेंस होना चाहिए. और बैलेंस में सबसे ज़्यादा प्रोटीन का मात्रा थोड़ा ज़्यादा कर देना, कैलोरी को कट डाउन करते जाना. वी डोंट नीड दैट मच कैलोरी, क्योंकि हम लोग सेडेंटरी बैठे रहते. समझी ना मम्मी? वॉक करी कि नहीं की? चलो, अब प्रेग्नेंट वुमेन को हम लोग ड्रग्स के बारे में क्या बोलेंगे? द यूज़ ऑफ ड्रग्स दैट आर नॉट एब्सोल्युटली एसेंशियल शुड बी डिस्करेज्ड. ठीक है. जिसका ज़रूरत नहीं है वो सबको एकदम नहीं खाना है. मतलब एकदम ज़रूरत है तभी प्रेगनेंसी के समय कोई ड्रग्स लेना है. सर्टेन ड्रग्स टेकन बाय मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में अफेक्ट द फीटस एडवर्सली. अच्छा, इसमें ड्रग्स किडनी ख़राब होने पर? अरे नहीं मम्मी, किडनी नहीं ख़राब होने पर. नॉर्मली भी खाना में हमेशा कैलोरी को कम करना चाहिए और प्रोटीन थोड़ा बढ़ा देना चाहिए. अब वो डिपेंड करता है कि प्रोटीन किस खाने पे. तो प्रोटीन तुम्हारा दाल में मिलेगा, प्रोटीन सोयाबीन में मिलेगा, प्रोटीन तुम्हारा चना वना में मिलेगा, ये सब है. और हरा सब्जी बहुत ज़्यादा खाना है. अभी ये जो नया फूड चेन आया है ना, फूड वाला वो जो बनाता है चाट, उसमें ना सब्ज़ी सबसे ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए और चावल और ग्रेन सबसे कम मात्रा में होना चाहिए. अब तुम बोलोगे कि तुम्हारा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, यू डोंट नीड दैट मच प्रोटीन, तुम्हारे वो प्रोटीन होने से यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, या ऐसा वैसा बोलोगी. सो बेसिकली यूरिक एसिड तो डीएनए वीएनए का ब्रेकडाउन से
बढ़ता है ना, तो प्रोटीन से तो आई डोंट नो कि बढ़ता है कि नहीं, आई डोंट थिंक कि प्रोटीन से बढ़ता है यूरिक एसिड। सो एक लिमिट में खाना बेटर होता है, मतलब कम चावल खाओ, दाल की मात्रा होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा सब्ज़ी की मात्रा होनी चाहिए, उसके बाद प्रोटीन आना चाहिए, उसके बाद कार्ब होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए हमारा खाना, तो वो हमारे शरीर में खिलेगा बहुत अच्छा, हमें एक्टिव रखेगा, तुमको शरीर में शक्ति महसूस होगी कि तुम्हारे पास एनर्जी है, तुमको नींद नहीं आ रहा है पूरा दिन। जब तुम थका थका महसूस करोगी, सोता हुआ महसूस करोगी, तो क्या फ़ायदा है ऐसे खाने का? कोई फ़ायदा है जब तुम्हारे काम का ही नहीं आ रहा है? तो इसीलिए हम बोल रहे हैं ड्रग्स, तो ड्रग्स मतलब होता है दवाई, ठीक है? ड्रग्स मतलब ड्रग्स नहीं होता है। तो दवाई ना, प्रेग्नेंट वुमेन को सिर्फ वही लेना है जिसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन उसके बिना काम नहीं चल रहा है तभी लेना है, वरना दवाई तो खाना ही नहीं है प्रेगनेंसी में। सर्टेन ड्रग्स टेकन बाय द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मे अफेक्ट द fetus adversely and cause fetal malpresentation. The classical example is thalidomide, a hypnotic drug which causes deformity in hands, feet on the baby born. The drug proved most serious when taken between 4 से 8 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी। शुरुआत वाला प्रेगनेंसी में तो एकदम ही नहीं लेना है कोई भी ड्रग्स। अदर एग्जाम्पल्स आर LSD which is known to cause chromosomal damage, streptomycin which may cause eighth nerve damage, ठीक है? स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो कान वाला डैमेज कर देता है, डेफनेस इन फीटस। आयोडीन कंटेनिंग प्रिपरेशन विच में कॉज कंजेनाइटल गोइटर इन द फीटस। कॉर्टिकोस्टीरॉयड में इम्पेयर फीटल ग्रोथ, सेक्स हार्मोन एंड प्रोड्यूसेस विरिलिज्म। टेट्रासाइक्लिन में अफेक्ट द growth of bone and enamel, formation of teeth. Anesthetic agents include uh, pethidine administered during labor and can have depressant effect on the baby and delay in the onset of effective respiration. Later, still in the puerperium, if the mother is breastfeeding, there are certain drugs which are excreted in breast milk, ठीक है? तो a great deal of caution is required in the drug intake by pregnant women. मैं तो अभी 1 घंटे और पढ़ने वाली हूँ गोपाल जी। पर गोपाल जी आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सो मुझे बहुत हर्ट हुआ था। मैंने देखा कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया। सो अगर आप कर दोगे तो अच्छा रहेगा। मेरा भी सब्सक्राइब बढ़ता है ना, तो आई गेट वेरी मोटिवेटेड, आई बिकम वेरी हैप्पी। सो रेडिएशन, अब रेडिएशन का क्या है कि एक्सपोजर टू रेडिएशन इज़ अ पॉजिटिव डेंजर टू द डेवलपिंग फीटस। ओके, अगर आपको नहीं करना है तो इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं। रेडिएशन, तो एक्सपोजर टू रेडिएशन इज़ अ पॉजिटिव डेंजर टू डेवलपिंग फीटस। द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ रेडिएशन इज़ एब्डोमिनल एक्सरे। पेट वाला एक्सरे तो बिल्कुल नहीं करवाना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। Case cohort studies have shown that mortality rate from leukemia and other neoplasm were significantly greater among children exposed to intrauterine X-ray. So in क्या बोलिए? तो इंट्रायूटराइन एक्सरे जो होता है ना, उसके वजह से बच्चों में ल्यूकेमिया और दूसरे न्यूप्लाज्म का चांसेस बहुत बढ़ गया था, मदर जो इंट्रायूटराइन एक्सरे ली थी। सो हाय मम्मी, दिस इज़ इन एडिशन टू कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन सच एज माइक्रोसिफेली। सर छोटा भी हो जाता है एक्सरे की वजह से। सो द एक्सरे एग्जामिनेशन इन प्रेगनेंसी शुड बी कैरिड आउट ओनली फॉर definite indication. X-ray dose kept to minimum. Furthermore, in all women of childbearing age among whom there is possibility of pregnancy, elective X-ray should be avoided, ठीक है?
in the 2 week preceding the menstrual period. ओके गोपाल सिंह, ठीक है, थैंक यू, पानी पी ही लेते हैं। देन वार्निंग साइंस क्या है? थैंक यू गोपाल सेन। तो वार्निंग साइन क्या है? Mother should be given clear cut instruction that she should report immediately in case of following warning signal. स्वेलिंग ऑफ द फीट, अगर माँ का पैर जो है उसमें स्वेलिंग आ रहा है तो उसको ये वार्निंग सिग्नल है। फिट्स आ रहा है यानी कि कन्वर्जन्स, एपिलेप्सी आ रहा है या हेडेक हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है माँ का, ब्लरिंग ऑफ द विजन है, तो ये सारे वार्निंग सिग्नल हो जाएगा। ब्लीडिंग या डिस्चार्ज पर वजाइना है या फिर एनी अदर अनयूजुअल सिम्टम है, तो ये सारे वार्निंग सिग्नल है। नाउ चाइल्ड केयर, द आर्ट ऑफ चाइल्ड केयर हैज़ टू बी लर्नड। Special classes are held for mother attending antenatal clinics. Mother craft education consists of nutritional education, advice on hygiene, child rearing, cooking demonstration, family planning education, family budgeting, ये सब का क्लासेस लेते हैं चाइल्ड केयर का। ना स्पेसिफिक हेल्थ प्रोटेक्शन, ठीक है, स्पेसिफिक हेल्थ प्रोटेक्शन में हम लोग क्या करेंगे? एनीमिया, other nutritional deficiency, asymptomatic bacteriuria, gestational diabetes, toxemia of pregnancy, tetanus, syphilis, German measles, RH स्टेटस देखना है, HIV इन्फेक्शन देखना है, हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन देखना है, प्रीनेटल जेनेटिक स्क्रीनिंग, ये सारे हम लोगों को मदर का देखना है, ठीक है। ये हम देख लेते हैं, फिर बाकी फिर नियोनेटल में पहुंच जाएंगे। नियोनेटल में पहुंच जाएंगे तब तो मज़ा आएगा। कितना बज रहा है? 11:04 हो रहा है। 12 बजे तक नियोनेटल का जितना ख़त्म कर सकेंगे उतना ख़त्म करेंगे। अरे ये वाला हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, नियोनेटल का पढ़ लेंगे। इट्स ऑल राइट, जितना हो सकता है उतना करते जाते हैं। 1 घंटे और पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ने का कोशिश करते हैं। मम्मी तुम सो जाओ, ठीक है, हम पढ़ लेते हैं। और शशांक तुम अपनी मम्मी का बर्थडे इंजॉय करो। इट्स ऑल राइट गाइज, यू गाइज कैन गो। मैं बस पढ़ लेती हूँ, उसके बाद आई गो टू स्लीप। 1 घंटा आई रीड। सो स्पेसिफिक हेल्थ प्रोटेक्शन क्या होता है? सो एनीमिया हम लोग पेशेंट का देखेंगे। अकॉर्डिंग टू NFHS4, about 50% of pregnant women in India are anemic. Major etiological factor being iron and folic acid deficiency. It is well known that anemia per se is associated with high incidence of premature birth, postpartum hemorrhage, puerperal sepsis, thromboembolic phenomenon in the mother. The government of India has initiated a program in which 100 milligram of elemental iron and 500 mcg of folic acid are being distributed daily for 100 days to pregnant women through antenatal clinics, प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड देयर सब सेंटर। सो मैं बता दूं, अच्छा मम्मी हो तुम अभी। सो मैं बता दूं कि जो आयरन का रिक्वायरमेंट होता है वो इतना होता है, 1000 mg पूरे प्रेगनेंसी में, ठीक है। तो उसको 180 दिन में करके दिया जाता है।
अदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी क्या हो जाता है? द मदर शुड बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज दैट मे अकर, particularly protein, vitamin, mineral, especially vitamin A, iodine deficiency. In some MCH centers, fresh milk is supplied free of cost to all expected mothers. Where this is not possible, skimmed milk should be given. Capsule of vitamin A and D are supplied free of cost. ऐसा सांग, तुम अपनी मम्मी का बर्थडे मनाने के बदले बैठ के यही सब देख रहे हो, ये ख़राब होता है प्रेगनेंसी के टाइम। और क्योंकि वो सिम्टम्स नहीं देता है, जैसे कि हम लोगों को अगर होगा तो बर्निंग मिक्चुरेशन होगा, जलेगा बहुत पेशाब करने में। पर जो प्रेग्नेंट औरत होती है ना, अच्छा हो गया, प्रेग्नेंट औरत होती है ना, उनका बर्न भी नहीं करता है पेशाब करने में, तो एसिम्टोमेटिक है तो ज़्यादा दिक्कत है ना, तो फिर हमें पता कैसे चलेगा? सो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आर एसोसिएटेड विथ रिस्क टू बोथ मदर एंड फीटस। इट इंक्लूड्स पायरोनेफ्राइटिस पैटर्न, preterm birth, pyelonephritis, preterm birth, low birth weight, increased perinatal mortality. Because of physiological changes during the pregnancy, the pregnant woman is more prone to UTI. Midterm urine culture is the recommended method for the diagnosis of ASB. वो सब चले गए। If culture facility is not available on site, midstream urine gram staining is recommended for the diagnosis. The patient should be appropriately treated for ASB, मतलब asymptomatic bacteriuria. देन उसके बाद हमें जेस्टेशनल डायबिटीज़ देखना है। तुम्हारी मम्मी को भी जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गया था ना, सो ये हमें पेशेंट में एकदम से चेक करना है। So hyperglycemia first detected at any time during pregnancy. Hyperglycemia यानी बहुत ज़्यादा ब्लड शुगर होना should be classified as either gestational diabetes mellitus or diabetes mellitus and pregnancy according to WHO criteria. ठीक है, या तो जेस्टेशनल हो सकता है या डायबिटीज़ मेलाइटिस इन प्रेगनेंसी हो सकता है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस इज हाई ब्लड शुगर दैट डेवलप्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड यूजुअली डिसअपियर्स आफ्टर गिविंग बर्थ। It can occur at any stage of the pregnancy but is more common in the second half. Having gestational diabetes also means that the woman is at increased risk of developing type 2 diabetes in the future. At the first antenatal visit, family history of diabetes should be recorded to determine if the woman is more at risk of gestational diabetes. The general symptoms are excessive thirst, बहुत प्यास लगेगा, hunger होगा, frequent urination, drowsiness or fatigue, dry itch skin, burning vision, slow healing of wounds. The second pregnancy may be associated with type 2 diabetes. Hyperglycemia during pregnancy can harm mother and the fetus. माँ और बच्चे दोनों को हार्म करेगा क्या? ब्लड का शुगर जब बढ़ जाता है तो इंक्रीज रिस्क ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, प्री एक्लेम्शिया, मिस कैरेज और स्टिल बर्थ, बर्थ डिफेक्ट एंड बिग बेबी, बर्थ वेट मोर देन 4.5। सो बेबी बड़ा होता है, ये जो डायबिटीज़ की वजह से 4.5 kg का बेबी भी हो सकता है, इतना बड़ा बेबी हो जाएगा। बर्थ डिफेक्ट हो सकता है, स्टिल बर्थ, मिस कैरेज, प्री एक्लेम्शिया भी हो सकता है मदर को, इसलिए डायबिटीज़ का होना बहुत ख़राब होता है। टॉक्सेमियाज ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है? द प्रेजेंस ऑफ एल्ब्यूमिन in urine and increase in the blood pressure indicates toxemia of pregnancy. Basically ये eclampsia, pre-eclampsia को बोल रहा है। Their detection and management are indicated. Efficient antenatal care minimizes the risk of toxemia of pregnancy. Toxemia of pregnancy basically pre-eclampsia. Then tetanus. If the mother was not immunized earlier, 2 doses of adsorbed tetanus toxoid should be given. The first dose at 16 to 20 week and the second dose at 20 to 24 week of the pregnancy. एक महीने के डिफरेंस में टीटी दिया जाता है, टीडी।
2 डोज दिया जाता है प्रेग्नेंट वुमेन को। अगर उसने 3 साल के अंदर 1 डोज ले रखा है, मतलब अपना डोज ले रखा है, तो उसको बस 1 डोज हम लोग देंगे, ठीक है। द मिनिमम इंटरवल बिटवीन 2 डोज शुड बी 1 मंथ, ठीक है। नो प्रेग्नेंट वुमेन शुड बी डिनाइड इवन 1 डोज ऑफ टेटनस टॉक्सॉइड इफ शी इज सीन लेट इन प्रेगनेंसी. For a woman who has been immunized earlier, one booster dose will be sufficient. When such a booster has been given, it will provide necessary cover for subsequent pregnancies during the next 5 years. It is advised not to inject tetanus toxoid at every successive pregnancy because of the risk of hyperimmunization and side effect. ओह, ये भी होता है, हाइपर इम्यूनाइजेशन और साइड इफेक्ट भी होता है। हर प्रेगनेंसी में नहीं देना है, 2 ही प्रेगनेंसी में देना है, तीसरे दूसरे में कुछ नहीं देना है अगर 5 साल के अंदर हुआ है तो। ना सिफिलिस, सिफिलिस इंपॉर्टेंट होता है। सिफिलिस इज एन इम्पॉर्टेंट प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ प्रेगनेंसी वेस्टेज इन सम कंट्रीज. Pregnancies in women with primary and secondary syphilis often end in spontaneous abortion. ठीक है, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो जाता है, स्टिल बर्थ, पेरीनेटल डेथ और द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड विद कंजेनाइटल सिफिलिस. सिफिलिटिक इन्फेक्शन इन द प्रेग्नेंट वुमेन इज ट्रांसमिसिबल टू द फीटस. फीटस को ट्रांसमिट हो जाता है सिफिलिस. न्यूरोलॉजिकल डैमेज विथ मेंटल रिटार्डेशन, ए राम, is one of the most serious consequences of congenital syphilis. When the mother is suffering from syphilis, injection of the fetus does not occur. Infection of the fetus does not occur before the 4th month of the pregnancy. ठीक है, मदर को अगर सिफिलिस है तो 4th मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी से पहले सिफिलिस नहीं होगा बच्चे को. इट इज़ मोस्ट लाइकली टू अकर आफ्टर द 6th मंथ, बाय विच टाइम द लैंगहन सेल्स लेयर हैज़ कम्प्लीटली एट्रोफिड. एट्रोफी हो जाता है लैंगर सेल्स लेयर, उसके बाद सिफिलिस बच्चे को हो जाता है. इन्फेक्शन ऑफ द फीटस इज मोस्ट लाइकली टू अकर व्हेन द मदर इज सफरिंग फ्रॉम प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेज ऑफ सिफिलिस दैन लेट स्टेज ऑफ सिफिलिस. इट इज़ ओ गॉड, ये तो दिख ही नहीं रहा है. आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं हो गाइस? गाइस, गाइस, मैं कैसे बिना बोलने वाले लोगों के साथ पढ़ा रही हूँ. इट इज़ रूटीन प्रोसीजर इन एंटीनेटल क्लिनिक टू टेस्ट ब्लड फॉर सिफिलिस एट द फर्स्ट विजिट. ठीक है, फर्स्ट विजिट में ही सिफिलिस चेक कर लेना है. सिंस द मदर कैन सब्सिक्वेंटली गेट इन्फेक्टेड विद सिफिलिस, द आइडियल प्रोसीजर वुड बी टू टेस्ट ब्लड फॉर सिफिलिस बोथ early and late in pregnancies. Congenital syphilis is easily preventable. 10 daily injection of procaine penicillin, 60 लाख यूनिट, 6 लाख यूनिट are almost always adequate. ठीक है, प्रोकेन पेनिसिलिन दे देंगे. हाय मम्मी. ना जर्मन मीजल्स. सो मैटरनल वायरेमिया एसोसिएटेड विद द रूबेला इन्फेक्शन. रूबेला को ही कहते हैं जर्मन मीजल्स. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी may result in infection of placenta and fetus. Only a limited number of fetal cell become infected. The growth rate of infected cell is reduced, resulting in a fewer number of cells in affected organ at birth. फीवर नंबर ऑफ सेल का नंबर बहुत कम हो जाएगा बच्चा का ऑर्गन्स में. द इन्फेक्शन में लीड टू डिरेंजमेंट एंड हाइपोप्लास्टिक ऑर्गन डेवलपमेंट, resulting in structural anomalies in the newborn. The timing of infection determines the extent of teratogenic effect. In general, the earlier in pregnancy infection occurs, the greater the damage to the fetus. जितना पहले इन्फेक्शन होगा उतना ज़्यादा बच्चे को डैमेज होगा. इन्फेक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी रिजल्ट इन एबनॉर्मैलिटीज इन इन्फेंट इन अबाउट 85% ऑफ द केसेस, बट डिटेक्टेबल डिफेक्ट आर found in about 16% of the infant who acquire infection during the second trimester. Birth defect are uncommon if maternal infection occur after 20 weeks of the gestation. ठीक है,
Ideally, we should prevent infection during pregnancy by preventing and controlling the disease in the general population. Currently, this is being attempted by vaccination of all aged children with rubella vaccine. मैंने नहीं लिया है rubella, and including the rubella vaccine in routine immunization schedule. Supplementing the community control of infection is the vaccination of all women of childbearing age who are seronegative. Before vaccinating, it is advisable that pregnancy be ruled out and effective contraception be maintained for 8 weeks after vaccination, before the possible risk of fetus from the virus. ठीक है, अब आर एच स्टेटस. ठीक है, तो अब आर एच स्टेटस में क्या देखना है हमें. सो द फीटल रेड सेल may enter the maternal circulation in a number of different circumstances during labor, cesarean section, therapeutic abortion, external cephalic version, and apparently spontaneously in the late pregnancy. शशांक, शशांक, तुम्हारे यहाँ पार्टी हुई थी, बहुत सारे लोग आए थे, तुम सबसे बोल बोल के सब्सक्राइब करवा सकते थे. ओ माय गॉड, इतने सारे बच्चे आए थे तो इतना सारा मोबाइल होगा, और सबसे अगर सब्सक्राइब करा देते तो कम से कम तो 10 और बढ़ जाता. शिट यार. कोई बात नहीं, अपनी मम्मी से ना मांग लो सबका नंबर, या फिर अपनी मम्मी के मोबाइल से जितने भी लोग आए थे सबका नाम पूछ लो और सबको मैसेज पर्सनल भेज दो कि सब्सक्राइब कर दीजिए. ये तो कर ही सकते हो. कम ऑन यार, कुछ काम तो करने पड़ते हैं ना, कुछ चीज़ें पाने के लिए कुछ काम करना पड़ता है, यू नो. कर ही सकते हो शशांक, क्यों नहीं कर सकते हो. तुम अभी ये सुनते सुनते वो अपनी मम्मी का मोबाइल ले लो और वो काम करते रहो, डिश 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 डिश, सबको सेम मैसेज कॉपी पेस्ट कर दो कि इसको ये कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए. मुझे लगता है हमारे चैनल को बहुत फ़ायदा होगा उससे. क्या बोलते शान. चलो हम थोड़ी देर और पढ़ेंगे, उसके बाद हम चले देखते हैं क्या करना है. कल कॉलेज जाना है क्या यार. कल कॉलेज नहीं जाते, सेकेंड हाफ कल नहीं जाएंगे ताकि बैठ के पढ़े. तो आर एच स्टेटस क्या होता है. द फीटल रेड सेल्स. ठीक है, fetal red cells may enter the maternal circulation in number of different circumstances during labor, cesarean section, therapeutic abortion, external cephalic version, and apparently spontaneously in the late pregnancy. The intrusion of these cells, if the mother is Rh negative and the child is Rh positive, provokes an immune response in her so that she forms an antibody to Rh, which can cross the placenta and produce fetal hemolysis. Okay? So, the same response may be produced to a greater degree by a transfusion of Rh positive blood. In a pregnant woman, isoimmunization mainly occurs during labor. So, so that the first child, although Rh positive, is unaffected except where the mother has been already sensitized. In the second or subsequent pregnancies, if the child is Rh positive, the mother will react to the smallest intrusion of fetal cell by producing antibodies to destroy fetal blood cell, causing hemolytic disease
in the fetus. Clinically, hemolytic disease take the form of hydrops fetalis, icterus gravis neonatorum, of which kernicterus is often a sequelae, uh, and congenital hemolytic anemia. कहाँ जाएं? जाओ लिखते हो. It is a routine procedure in antenatal clinic to test blood for rhesus type in early pregnancy. If the woman is Rh negative and the husband is Rh positive, she is kept under surveillance for determination of Rh antibody level during antenatal care. The blood should further be examined at 28 weeks and 34 to 36 weeks of gestation for antibodies. Rh antibody D immunoglobulin should be given at 28 week of gestation so that sensitization during the first pregnancy can be prevented. If the baby is Rh positive, the Rh anti D immunoglobulin is given again within 72 hours of delivery. 3 दिन के अंदर हम लोग एंटी डी दे देते हैं. इट शुड बी गिवन आफ्टर अबॉर्शन. Post maturity should be avoided. Whenever there is evidence of shifted to an equipped center specialized to deal with RH problems, the incidence of hemolytic disease due to RH factor in India is estimated to be approximately 1 for every 400 to 500 live births. नहीं यार, कॉलेज नहीं जाएंगे हमको पढ़ना है तो हम पढ़ेंगे. अरे हमको एक्चुअली पता नहीं था यार कि इसका एग्ज़ाम है, वरना हम ये 2-3 दिन पहले से तैयारी करते. हम ऐसे ही तुषा से बात कर रहे थे कि और पढ़ाई कैसे चल रहा है, तो वो बोलती है कि अभी तो परसों कॉमेट का एग्ज़ाम है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा. हम बोले हैं कॉमेट का एग्ज़ाम, ये कब हो गया? तो हम जाके देखते हैं, बोलते हाँ ही सही में कॉमेट का एग्ज़ाम है और उसके अगले हफ्ते एफएमटी का है. तो मेरा तो सही यहाँ छुट्टी गुल हो गया. फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर हम आकर के प्लान बनाए कि चलो पढ़ते हैं और क्या. So whenever there is evidence of hemolytic process in fetus in utero, the mother should be shifted to an equipped center specialized to deal with RH problems. The incidence of hemolytic disease due to RH factor in India is estimated to be approximately 1 for every 400 to 500 live births. यानी काफ़ी कॉमन है. HIV infection. So HIV may pass from an infected mother to her fetus through the placenta or to her infant during delivery or by breastfeeding. About 1/3 of the children of HIV positive mother get infected through this route. The risk of transmission is higher if the mother is newly infected or if she has already developed AIDS. Voluntary prenatal testing for HIV infection should be done as early in pregnancy as possible for pregnant women who are at great risk. If they or their partner has a number of sexual partners, has a sexual transmission disease, uses illicit injectable drugs, etc. Universal confidential voluntary screening of pregnant women in high prevalence area may allow infected women to choose therapeutic abortion and make an informed decision on breastfeeding or receive appropriate care. Screening should not be used as a substitute for primary prevention. Through community-wide education on safe sex practices, making condom readily available and preventing prenatal transmission. So hepatitis B infection. So spread of infection from hepatitis B virus carrier mother to the babies appear to be a factor for the high prevalence of hepatitis B virus infection in some regions. The mechanism of perinatal infection is uncertain. Most of the infection appears to
occur at birth. Transmission of the virus to baby after delivery is likely if both surface antigen and E antigen are positive. Vertical transmission can be blocked by immediate post delivery admission of B immunoglobulin and hepatitis B vaccine. Refer to page diseases for details. ना प्रीनेटल जेनेटिक स्क्रीनिंग में क्या करते हैं? प्रीनेटल जेनेटिक स्क्रीनिंग इंक्लूड्स स्क्रीनिंग फॉर क्रोमोसोमल abnormalities associated with serious birth defects, screening for direct evidence of congenital structural abnormalities, and screening for hemoglobinopathies and other inherited conditions detectable by biochemical assay. Universal genetic screening is generally not recommended. Screening for chromosomal abnormalities and for direct evidence of structural abnormalities is permitted in pregnancy in order to make the option for therapeutic abortion available when severe defects are detected. Typical example are screening for trisomy 21 Down syndrome and severe neural tube defect. Women aged 35 years and above and those who have already have an afflicted child are at higher risk. So mental preparation क्या होता है? So antenatal care does not mean only palpation, blood and urine examination and pelvic measurements. These are no doubt important aspect of antenatal care. Mental preparation is an important as important as physical or material preparation. Sufficient time and opportunity must be given to an expectant mother to have a free and frank talk on all aspect of pregnancy and delivery. This will go a long way in removing her fears about confinement. The mothercraft classes at MCH centers help a great deal in achieving this objective. So family planning is related to every phase of the maternity cycle. The mother is psychologically more receptive to advice on family planning than at other times. Educational and motivational effort must be initiated during the antenatal period. If the mother has had two or more children, she should be motivated for puerperal sterilization. In this connection, the All India postpartum program service are available to an expected mother in India. Pediatric component क्या होता है? It is suggested that pediatricians should be in attendance at all the antenatal clinic to pay attention to the under 5 accompanying the mother. Now intranatal care. So intranatal is जब मदर बर्थ दे रही है तब होता है ना. इंट्रानेटल पढ़ लेते हैं, फिर पोस्ट नेटल कल बाद में देखेंगे. ठीक है. चाइल्ड बर्थ इज़ अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बट कॉम्प्लिकेशन में अराइज. Septicemia may result from unskilled and septic manipulation and tetanus neonatal from the use of unsterilized instruments. The need for from the use of unsterilized instrument. The need for effective intranatal care is therefore indispensable even if the delivery is going to be normal one. The emphasis is on the cleanliness. It entails clean hand and fingernails, a clean surface for delivery, clean cord care, that is clean blade for cutting cord and clean tie for the cord, no application on cord strump, and keeping birth canal clean by avoiding harmful practices. Hospital and health centers should be equipped for delivery with midwife kits, regular supply of sterile gloves, drapes, towel, cleaning materials, soap, antiseptic solution, as well as equipment for sterilization, sterilizing instrument and supplies. There are delivery kits available with the item needed for basic hygiene for delivery at home. Where a midwife with a midwifery kit is not
likely to be present. The aim of good intranatal care are uh, thorough asepsis, delivery with minimum injury to the infant and mother, readiness to deal with complications such as prolonged labor, antepartum hemorrhage, convulsion, malpresentation, prolapse of the cord, etc. Care of the baby at delivery, resuscitation, केयर ऑफ द कॉर्ड, केयर ऑफ द आइज, ये सब केयर कर सकते हैं. डोमिसाइलरी केयर क्या होता है? मदर with normal obstetric history may be advised to have their confinement in their own homes provided the home conditions are satisfactory. In such cases the delivery may be conducted by health worker female or trained dai. This is known as domiciliary midwife service. The advantage of domiciliary midwife service are the mother delivered in the familiar surrounding of her home, and this may tend to remove the fear associated with delivery in the hospital. The chances of cross infection and uh, are generally fewer at home than in the nursery hospital, and the mother is able to keep an eye upon her children and domestic affairs. This may tend to ease her mental tension. Now, domiciliary midwifery is also not without disadvantage. The mother may have less medical and nursing supervision than in the hospital. Disadvantage क्या क्या है? ठीक है, एडवांटेज क्या क्या है, डिसएडवांटेज क्या क्या है? लेस सुपरविजन मिलेगा, मदर मे हैव लेस रेस्ट, शी मे reassume her domestic duties too soon, her diet may be neglected. Strictly speaking, many homes in India are unsuitable for even a normal delivery. The augment that childbirth is a natural event and should take place at home does not guarantee that everything will be normal. Since 72.2% of India's population live in rural area, most deliveries will have to take place in the home with the aid of female health worker and trained domiciliary outreach is a major component of intranatal health care. The female health worker, who is a pivot of domiciliary care, should be adequately trained to recognize the danger signs during labor and seek immediate help in transferring the mother into the nearest primary health center or hospital. The danger signs are sluggish pains or no pains after rupture of membrane. पेन करे या फिर पेन ना करे मेम्ब्रेन का रप्चर करने इसके बाद, ये डेंजर साइन है. गुड पेन्स फॉर एन आवर आफ्टर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन बट नो प्रोग्रेस, पेन हो रहा है पर प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, ये भी रेड फ्लैग साइन है. प्रोलैप्स ऑफ द कॉर्ड और हैंड, meconium stained liquor or slow irregular or extensive fast fetal heart, excessive show or bleeding during labor, collapse during labor, placenta not separated within half an hour after delivery, postpartum hemorrhage or collapse, and temperature of 38 degrees Celsius over during labor. There should be a close relation between domiciliary and institutional delivery system. सो इंस्टीट्यूशनल केयर के बारे में क्या लिखा है? अबाउट 1% ऑफ द डिलीवरीज टेंड्स टू बी अब नॉर्मल. ठीक है, 4% डिफ़िकल्ट होता है, रिक्वायरिंग द सर्विस ऑफ अ डॉक्टर. Institutional care is recommended for all high risk cases where home conditions are unsuitable. Mother is allowed to rest in bed on the first day after delivery. From the next day, she is allowed to be up and about. The current practice is to discharge the woman after 48-hour lying in period after a normal delivery. Rooming in. Keeping the baby's crib by the side of the mother's bed is called rooming in. This arrangement gives an opportunity
for the mother to know her baby. Mothers interested in breastfeeding usually find there is a better chance for success with rooming in. Rooming in also allays the fear in mother's mind that the baby is not misplaced in the central nursery. It also build up her self confidence. Okay, guys, अब postnatal care I'll read from tomorrow. Bye, guys. Actually, postnatal care is very small. पढ़ ही सकते थे. अच्छा, अगर हमको मुझे मन किया ना तो फिर से हम शुरू करेंगे postnatal care और ये सब पढ़ना. ठीक है, बाय.